Welcome in the next lecture. So today we are going to discuss about the difference. Okay, yeah, what is the difference between e-commerce SEO or news SEO? Okay, like in this course till now we have discussed about the news cycle, news SEO, and so many things. But what is the difference between news SEO and e-commerce SEO or regular SEO? इन दिस मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे जस्ट डिफरेंसेस बिटवीन दी एसईओस लाइक न्यूज़ एसईओ क्या है, कॉमर्स एसईओ क्या है, सास एसईओ क्या है, या फिर रेगुलर एसईओ क्या है, ट्रेडिशनल एसईओ क्या है, एआई के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए. So this module is completely dedicated to know the difference between uh, different types of SEO. Okay, so let's start. So content lifespan. Okay, so months to year evergreen. ई-कॉमर्स एसईओ और रेगुलर एसईओ में जनरली जो कंटेंट की वैलिडिटी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एवरग्रीन और लाइफ टाइम होती है. ओके, न्यूज एसईओ में मिनट्स टू आवर. ओके, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि न्यूज की जनरली 48 आवर्स या 24 आवर्स ही वैलिडिटी होती है. कोई भी न्यूज आती है, लोग पढ़ते हैं, देन इट इज आउटडेटेड आफ्टर 2 और 3 days. सो दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस कि ई कॉमर्स एसईओ में जनरली जो कंटेंट होता है वो एवरग्रीन होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, बट न्यूज में इट्स जस्ट फॉर मिनट्स एंड आवर्स एंड डेज, नॉट मोर देन इट. प्राइमरी गोल, ई कॉमर्स एसईओ का प्राइमरी गोल होता है रैंकिंग इन द एसईआरपी. ओके, दैट्स मीन ऑर्गेनिक ब्लू लिंक्स. बट न्यूज एसईओ का प्राइमरी गोल होता है रैंकिंग इन द टॉप स्टोरीज, carousel या फिर गूगल न्यूज या फिर डिस्कवर. ओके, because generally what happens, let's take an example. Suppose that you get as a news website, आप एससीआरपी में सातवें या आठवें या फिर पांचवें नंबर पे रैंक भी करते हैं, then there are very rare chance that people will read your news. जनरली जो टॉप स्टोरीज में आती है, जो लेटेस्ट न्यूज होती है, वही लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज नो. इंडेक्सिंग स्पीड, सो जनरली ई कॉमर्स एसईओ में डेज और वीक्स होते हैं, स्लो इंडेक्सिंग होती है. बट न्यूज वेबसाइट में रियल टाइम इंडेक्सिंग होती है इन मिनट्स, और वी कैन से जस्ट आफ्टर यू मेक द न्यूज लाइव. ओके, व्हाई? Because news may content is totally depend on the time. You suppose that your news is taking so much time to getting index, then there is no purpose to covering it fast or first. Okay, keyword focus, generally high volume, low difficulties, simple, nothing. जिसकी वॉल्यूम अच्छी हो, जिसपे कंपटीशन कम हो, सच काइंड ऑफ कीवर्ड जनरली ई कॉमर्स एसईओ में हम टारगेट करते हैं. But news SEO may generally Google Trends and real time spike. Like what is trending, what is happening in the industry, what is spiking. Okay, that thing we cover as soon as possible, regardless of the volume and the difficulty of that specific keyword. मैन ट्रैफिक ड्राइवर्स कौन से होते हैं? Okay, search queries. In e-commerce, there are search queries that pull the a traffic. That means simply the user will search something regarding what they want to buy, then Google will show the result, then they click on it. So that traffic driver are search queries, but it is completely different in the news SEO. Generally, news feed or Google Discover traffic drivers होते हैं for the news. Sitemap type, standard XML sitemap, but for news and media there are specific specialized or specific XML news sitemap type which help news website to get indexed as soon as possible. Okay, key metrics, domain authority or conversion, freshness and velocity. This is very important point when you are working on e-commerce website. Then domain authority and conversion is very important. But when you are on the news and media website, then freshness and velocity is very important. Your content should be fresh and so many news you publish in the day. Authority signal, generally backlinks and technical structure. But for the news, it's an EEAT, experience, your authority,
your expertise and your trust, and simple, clear editorial transparency. These are the authority signals. Sitemap limit. All active URLs will be in the sitemap, but in the new sitemap, only and only last 48 hours URL will be in the new sitemap, rest of the URL out of the sitemap, because these are the important only. There is a no purpose to keeping the news in news sitemap which are 1 year old or 2 year old. Sitemap limit all, sorry, headline style, simply SEO focused headline style. Okay, but news in the news SEO, CTR focus, urgency and curiosity. Why this news is important? And the news headlines should create a curiosity in the reader so they can click and read the news. Okay, so that's it for this lecture. That is the common difference between the news SEO and the regular SEO. So whenever you work on news SEO, your mindset will be the clear that yes, that kind of thing I have to follow, because the steps which comes in the e-commerce SEO you cannot follow in the news SEO. Complete mindset, content strategy, everything is almost different. Okay, so thank you so much, Miss Hazel. In the next lecture, we will discuss the other difference.